ଏମିତି କଣ ଦେଖୁ ଅଫକୋର୍ସ এটা বিগ স্ক্রিন করবো, এটা বিগ স্ক্রিন করবো। ବାଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା। Morning class. Yeah, Purvo class in the previous class we have studied about salient features of the Indian Constitution. So today we will talk about the preamble. Like American Constitution, we also have preamble, but the preamble was added little later. But in American Constitution, तांकर preamble तांकर सहित आसीथिला। हमर preamble एटा हला हम कंट्री रो preamble और एटा अमेंड हेकी परे 1976 रे 42nd अमेंडमेंट रे तीनटा वर्ड आसीथिला। तादर हला सोवरेन, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। बाकी स्टार्टिंग रु थिला 1949 रु। तो आम प्रियम्बल कौन कहूँ वी द पीपल ऑफ इंडिया माने से द स्ट्रेंथ डिराइव करछि फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। एटा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल रु आछि, यूएस टू आछि। वी द पीपल ऑफ इंडिया तो हमरा having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuming the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये प्रियम्बल तुमको मन रखा पड़ो। कोठी आंसर कोड कला बेले काम आसो विल कम हैंडी। तो आम तार इच वर्ड और कौन पे एटा हेतिला विल डिस्कस इन डिटेल्स। यदि पचरा जाए कि प्रियम्बल टा कौन गाइस व्हाट इज प्रियम्बल? प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने सेटा प्रीफेस हम कॉन्स्टिट्यूशन दैट एक्सप्रेसेस philosophy, objective, ideals, and source of the authority of the Constitution. It is often described as the identity card or soul of the Constitution. जैसे कहली the preamble रो माने है ना introduction or preface to our Constitution. Larger meaning रे एटा ना soul हम Constitution. हमर से जो preamble हैला चार
चार्टा पार्ट रे कोन एक्सप्लेन करछि सेटा तार प्रथम मन रखिदबा डेट ऑफ एडॉप्शन 26 November 1949 who gave the constitution we the people of India nature of the Indian state sovereign गोटे गोटे वर्ड हमें परे in the coming slide we'll understand what is sovereign what is socialist what is secular what is democratic what is republic एटा ला नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव है जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी सोवरेन जब पचरा हम व्हाट डू यू मीन बाय सोवरेन इंडिया इंडिपेंडेंस पाइथिला 1947 रे बट कंप्लीट इंडिपेंडेंस आसला 1950 रे जदि पचरा जाए जे सोवरेन रो मीनिंग कोन जे इंडिया इज फ्री और कंट्रोल फ्रॉम एनी फॉरेन पावर ता निज टेरिटरी किबा टेरिटरी बाहर जदि इंडिया पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एबे हला 1945 एटा बाय चॉइस इथरे ता सोवरेनिटी किछि पळैला सोवरेन माने हला इंडिया कैन डिसाइड्स इट्स फॉरेन माने ता निज टेरिटरी आउ फॉरेन टेरिटरी भितर से जहा से तो जहा रिलेशनशिप रखि परियो विदाउट एनी फोर्स और प्रेशर इट कैन कंडक्ट ता निज फॉरेन पॉलिसी से करि परियो जेंति कहली जे कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1950 कोन भाई इंडिया 1947 रे इंडिपेंडेंस पाइला बट he was under the dominion of British Commonwealth of Nations ता माने कोन दो इंडिया रा कॉन्स्टिट्यूशन हैला प्रेसिडेंट हैला बट अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशन रो हेड हबो तांको क्वीन हमें सेटा को मानुतुनु 1950 रे आ तांकर क्वीन रो गोटे लोकल स्पॉक गोटा को हाउची गवर्नर जनरल इंडिया रही की बुझुतला 1950 जाय तापरे इंडिया कहला ना वी विल हैव आवर ओन हेड जाको हमें प्रेसिडेंट बोली कहू तापरे हला सोशलिस्ट सोशलिस्ट बेसिकली हमें जब पूरा डेफिनेशन तो पढ़िबा सोशलिस्ट तो नो सोशलिज्म सोशलिज्म दी प्रकार रे अछि गोटे हला स्टेट और हला डेमोक्रेटिक स्टेट सोशलिज्म का कोन जे मोस्ट ऑफ द देशर कंट्रोल तांकर स्टेट पाखरे माय गवर्नमेंट पाखरे रहइबो ऑल द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विल बी अंडर द गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का कोन किछि लोकन को पाखरे रहइबो और किछि प्राइवेट पाखरे रहइबो एटा हमें मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल ओडिसा रे संख्या कोन अछि टाटा पावर 5149 शेयर रे गवर्नमेंट भी अछंती प्राइवेट प्लेयर टाटा पावर भी अछंती किंतु 1991 ପରେ एलपीजी मॉडल हैला ପରେ ଟିକେ प्राइवेटाइजेशन अधिका हे जाई तो हमें पढ़िबा टर्म सोशलिस्ट इन द पिरामिड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रिफ्लेक्ट्स द कमिटमेंट ऑफ द इंडियन स्टेट टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी इन सोसाइटी स्टेट सोशलिज्म रे कोन प्राधान्यता दिया जाय जोटा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म रे जे हमर प्रॉपर्टी सॉरी हमर देश रे जहा रिसोर्सेस अछि पैसा खाइबा एटा इक्वालिटी भाबरे सोसाइटी भाबरे डिस्ट्रीब्यूट हो गोटे सेगमेंट ऑफ लोक को बहुत जिंस न पड़ो जल्दी कहू वेल्थ एंड रिसोर्सेस तो आमर ऑर्थोडॉक्स सोशलिज्म माने स्टेट ओनरशिप स्टेट सोशलिज्म नुह आमर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म नेचर ऑफ द इंडियन सोशलिज्म है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अचीव थ्रू पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स नॉट रेवोल्यूशन मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल जोटा कोएक्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर पब्लिक हला गवर्नमेंट प्राइवेट हला जेतिकी प्लेयर्स अछंती
रिलायंस ही पारू, टाटा ही पारू, अदानी ही पारू, आउ स्टेट कंट्रोल करे with allowing private enterprise. सेक्युलर सेक्युलर वर्ड टा भी जेमती कहितली एटा परे आसीतला 42nd अमेंडमेंट एटा आसीबा पूर्वरु यार कोउठी हमरो थिला यार नेम टा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे एटा दिसुतला बिफोर प्रिएम्बल it is being featured in directive principles of state policy. Secular सेमती 42nd अमेंडमेंट ए वर्ड टा पसा जाइतला जदि पचरा हम तुमको जहाँ तो लिखा है पढ़ा कि इंडिया रो रिलीजन कौन इंडिया सेक्युलर बिफोर 42nd अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट पाखे गोटे केस जाइला कि इंडिया तो रिलीजन कौन गोटे स्टेट किंवा गोटे कंट्री तीनटा रिलीजन नो रिलीजन थियोक्रेटिक रिलीजन आउट है नो किंवा थेस्ट सुप्रीम कोर्ट कहला जे गोटे केस रे जे हमर इंडिया रो तीन प्रकार से धर विभक्त होती गोटे कंट्री नो रिलीजन मैंने से कंट्री किसी रिलीजन फॉलो करते थियोक्रेटिक माने पाकिस्तान भलिया गोटे रिलीजन सुप्रीमेसी सेक्युलर माने सबू रिलीजन पर इक्वल फीलिंग्स अच्छी तो से सुप्रीम कोर्ट जो एटा 1976 रे पहुंचला पूर्व सेक्युलर पूर्व इंडिया डेफिनेटली सेक्युलर हेतिबो कारण आर्टिकल 25 टू 28 जोटा फंडामेंटल राइट रो अछि हम आगु पढिबा फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस प्रैक्टिस प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन रे से केबे भी इंडिया ए दीटा हेइ नथिबो हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर सेक्युलर ही करिबो सेटा एशिया पूर्व ही सुप्रीम कोर्ट क्लियरली हम कहि दैथिला जे हमर सेक्युलर रिलीजन जेमति मु पढै हमर कंट्री न्यूट्रलिटी मेंटेन करे रिलीजन एस्पेक्ट नेचर ऑफ द इंडियन सेक्युलरिज्म होला इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स सर्वधर्म संभव इक्वल रेस्पेक्ट फॉर ऑल फेथ्स के जैनिज्म हो के बुद्धिज्म हो कि हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी मुस्लिम सब हमर समान स्टेट रो किछि रिलीजन ना हम कंट्री रो सेमति स्पेसिफिक रिलीजन किछि ना इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल रिलीजियस ग्रुप्स आउ जेमति फंडामेंटल राइट रे अछि तमे तम निज अनुसार फ्रीडम ऑफ रिलीजन तमे फॉलो कर परिबो रिफॉर्मेटिव गोल ऑफ स्टेट का स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉर सोशल रिफॉर्म जेमति कि अबॉलिशिंग अनटचेबल डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेसी एटा दीटा वर्ड ग्रीक वर्ड रो आछि डेमोस और क्रेटिया डेमोस माने पीपुल एटा हला रूल रूल ऑफ द पीपुल जोटा अब्राहम लिंकन को फेमस लाइन ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल जेटा अब्राहम लिंकन कहथिले जदि हम डेमोक्रेसी देखिबा डेमोक्रेसी का दी प्रकार नॉर्मली इट इज ऑफ टू टाइप्स वन डायरेक्ट सेकंड हला इनडायरेक्ट डायरेक्ट अंडर रे पार्लियामेंटरी और हला प्रेसिडेंशियल तो डेमोक्रेसी जब देखिबा हमर हला इनडायरेक्ट पार्लियामेंटरी फॉर्म
ऑफ डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट आमे नॉमिनेट करू सी आम कथा नहीं कि पार्लियामेंट किंबा लेजिस्लेचर रे रखन हमर इनडायरेक्ट दी प्रकार अछि ओटे प्रेसिडेंशियल ओटे पार्लियामेंट हमर पार्लियामेंट डायरेक्ट टा कोदी अछि स्विट्जरलैंड डायरेक्ट केते प्रकार चारि प्रकार रेफरेंडम इनिशिएटिव रिकॉल प्लेबिसाइट रेफरेंडम एटा हम कांसेप्ट जानिया दरकार नहीं खाली गोटे दी वर्ड तो बुझे दोछि कोन एउडा रेफरेंडम माने गवर्नमेंट रेफर करबो लोकन को जे वर्ड अछि रेफरेंडम रेफरेंडम जे ब्रिटेन ब्रेक्सिट रो पार्ट हबो माने यूरोपियन यूनियन रहिबो कि रहिबोनी से लोकन को जाई कि पचार लोक सेठी वोट कले हमें रहिबा तो ब्रिटेन रहिला इनिशिएटिव माने कोन लोक जिबे एठी गवर्नमेंट आसिला लोकन पर इनिशिएटिव रे लोक जिबे गवर्नमेंट करिया माने इनिशिएट करिवे जे तमे गोटे लॉ आनो जोटा हमकु दरकार फॉर एग्जांपल देश रे बहुत रेप होची लोक जाई कि कहिबे गवर्नमेंट को जे नेक्स्ट टाइम रेप हेले हम किछि सुना सुनी नहीं सीधा ताकू गुली मार दवा किबा हैंग टिल डेथ इमीडिएटली कर दवा से भलिया लॉ आसु सेटा इनिशिएटिव अंडर रे आसी रिकॉल माने कोन हमें जो गवर्नमेंट को वोट देकी जितौचे धर से लागिला से ठीक गवर्नमेंट नो ताकू वापस बुले दवा गवर्नमेंट को तो वापस बुले परिबानी निज जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रे निज जो कैंडिडेट को रिकॉल करि एटा हला रिकॉल प्लेबिसाइट माने गोटे एरिया सपोज हमर कश्मीर एटा डिसाइड माने कश्मीर टा इंडिया रहिबो कि पाकिस्तान रे रहिबो कि गोटे इंडिपेंडेंट नेशन हो एटा केमति डिसाइड करबो लोक को पचरा से केसटा रे कुछि टेरिटोरियल जिनस आसे सेठी प्लेबिसाइट कांसेप्ट आसे एटा डायरेक्ट डेमोक्रेसी रे आसे आमे किंतु या ऊपर फोकस करबो जेमति कहली इंडिया फॉलो द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल पॉलिटिकल अथॉरिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द गवर्न हम नेचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी कोन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जेमति मु कहली लोक इलेक्ट करिवे रिप्रेजेंटेटिव्स टू लेजिस्लेचर हम असेंबली को किबा पार्लियामेंट our governance carried out on their behalf. Parliamentary democracy executive is responsible to the legislature. Real executive power is in the council of ministers headed by the prime minister. आउ आमे केमिति करिवु जो माने भी 18 वर्ष रु ऊपर को से माने वोट देबे और समस्त कर इक्वल राइट अछि पर लोक गोटिए वोट गोटिए वैल्यू तापर आसला रिपब्लिक रिपब्लिक माने कोन जे हमर हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश रे कोन हेड तांकर हेड ता हला तांकर किंग क्वीन जोटा हेरिडिटरी जोटा टू द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन गोटे फैमिली पूरा तांकर हेड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ बट हमर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली हम एमएलए एमपी माने वोट दियति आमे दोना बट इलेक्ट होती फॉर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स Republic means yeah, the term republic in the preamble of the Constitution of India signifies the head of the state is elected directly or indirectly and not a hereditary monarch. British रे तांकर hereditary monarch. हमर sovereignty हम लोकन को पाखरे अछि. तो हम indirectly represent करना हम जो एमएलए एमपी को करू से माने वोट देकी प्रेसिडेंट को जितांती. Public office जो गवर्नमेंट ऑफिस समस्त को ओपन ही अछि विदाउट एनी हेरिडिटरी प्रिविलेज. तापरे जस्टिस वर्ड का प्रिएम्बल आसिया पूर्व दीटा जगह रे अछि फंडामेंटल राइट्स रे भी अछि आउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ता आगो क्लास रे हम सब पढिबा डिटेल सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को कंबाइन भी कले एटा कोनती डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आउ एक तीनटा आगो रशियन रिवॉल्यूशन रो आस्तिला कांसेप्ट उडा रशियन रिवॉल्यूशन ए दीटा जति मिसिबो ए दीटा को मिसिबी कोनती
distributive justice. The term justice in the preamble of the Constitution of India reflect कौन करे state to establish social order by securing justice to all sphere of life. The preamble provides for social justice, economic justice और political justice. कौन है वार्ड रो माने मैं आगो स्लाइड रे देखिता. Social justice माने कौन? The सबू citizens, every citizens without based on caste, religion, gender, race, status or place of birth रे हमें ताको social status देखि discriminate करिबानी. Social inequalities रहिबनी. कौन? Constitutional reflection भी अच्छी जोटा fundamental right लिखा है. Abolition of untouchability, equality before law, and reservation policy for weaker sections. माने based on social status, हमें ताको discriminate करिबा नहीं. Equal justice for all. समस्ते आईन आगे समान. Article 14. Social status देखिए जब कहली तमे डिस्क्रिमिनेट करि पारि. कि धर हिंदू अछि कि क्रिश्चियन अछि कि मुस्लिम अछि कि को रिलीजन रो अछि कि को जेंडर कि बा को कास्ट को रेस देखि तमे करिबो. समस्ते आईन आगे इक्वल. तापरे इकोनॉमिक जस्टिस माने बेस्ड ऑन इनकम तमे काहे को डिस्क्रिमिनेट करि परिबो. एटा अछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रमोटिंग वेलफेयर स्टेट. Economic justice means seeks reduction of economic inequalities and fair distribution of wealth and resources. It is state responsibility. Whose section of society should not suffer from economic exploitation. माने economic base रे income status based रे तमे justice दिया जिवो. समस्त equal. Constitutional reflection एटा कोठो आस्थिला डायरेक्टिव प्रिंसिपल या आगुर आसिया पूर्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल रे क्लियरली लिखा छि दैट फ्रॉम वेलफेयर स्टेट को हमें प्रमोट करिबा. Equal pay for equal work, prevention of concentration of wealth, और equal pay for equal work for both men and women. कि पुओं को अधिका मिलिबनी कि झियों को कम मिलिबनी सेम कम. लास्ट है पॉलिटिकल जस्टिस. समस्त इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस. और समस्त को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफ्लेक्शन पर समस्त को राइट टू वोट, फ्री एंड फेयर इक्वल इलेक्शंस, इक्वालिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. हमें जेकोसी गवर्नमेंट ऑफिस को एक्सेस कर परिबा राइट हमर पई और सेठी किछि डिस्पैरिटी हबो. जेकोसी गवर्नमेंट ऑफिस को हमें जाई परिबा. सेठी तुमको मना कर परिबा नै तुम ए कास्ट रो ए कलर रो किबा ए सेक्शन रो सेठी तुम पॉसिबल सेटा हबो. एटा जस्टिस पार्ट आछी. तापर हम पढिबा लिबर्टी. द टर्म लिबर्टी इन द लिबर्टी माने तुम कंट्री रे तुम पई जहा सब एनाक्ट हेछि जे तुम प्रिएम्बल हमको गारंटी कौन करछि लिबर्टी ऑफ थॉट तुम रहि परिबो, एक्सप्रेशन रहि परिबो, बिलीफ रहि परिबो, वर्शिप रहि परिबो. एटा लिबर्टी का बेसिकली माने फ्रीडम तुम कॉन्स्टिट्यूशन में जहा लिखा है तुम से करि परिबो. ना कि तुम मन इच्छा करबा कहबो लिबर्टी. मद पीबो किबा गाड़ी जोरे चलेबो 100 200 रे कहबो एटा हम लिबर्टी ना. कॉन्स्टिट्यूशन में जहा लिखा है सेवड़ा तुम्हें प्रैक्टिस करियो. देन डेफिनेशन है प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट सिग्निफाइज द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल to think, express, believe and act without arbitrary restrictions, subject to constitutional limits. मन इच्छा करिकि कहि परिबोनी एटा हम लिबर्टी. It does not mean absolute freedom. तो preamble specifically एति करला परे तमे जतले जा करिवो लिबर्टी अनुसार it must be in the framework of rule of law, right of others and public order and morality. तापरे हां आ गोटे कथा लिबर्टी टा हमर फ्रेंच ए वर्ड टा हमर फ्रेंच रिवॉल्यूशन रो आस्ते.
तापर टर्म इक्वालिटी बुझी होची सब का किछि डाउट अछि का डाउट अछि किछि equality. The term equality in the preamble of the Constitution of India signifies the absence of special privileges and the provision of equal opportunities for all individuals. Equality माने कौन हमारा एटा कौन preamble ने specify करछि जे हमें preamble रे equality रखिबा और eliminate करबा कौन based on caste, religion, gender, place of birth और economic और social status रे काहा को discrimination करबा नाही समस्त हम लॉ आगे इक्वल समस्त को all citizens are equal before the law and should receive equal protection and opportunities without any discrimination. Law आखिरे समस्त equal. एटा constitution ने लिखा है कि dimension of equality मतलब broader perspective. Equality का कौन? समस्त equal before law. No person is above the law. Derived from British concept of law. Equal protection of laws. Similar treatment for people in similar circumstances. Derived from the American Constitution. Equality of opportunity, social equality, constitutional provisions तार को ये सब फंडामेंटल राइट रु आसीची जे आम देश रे सेम अपॉर्चुनिटी सेम सबु माने सबु लोक लॉ आगे सेम का को स्पेशल प्रिविलेज एटी कोठी भी दिया करिवे सेटा लॉ हो चाकरी हो किबा धर तमे गोटे स्टेट रु आ गोटे स्टेट को जीव सेtre भी इक्वल जे नाही धर गोटे लोक एठी अछि ओडिसा रु से बॉम्बे गला बॉम्बे लोक को बेसी प्राधान्य मिलिबो ओडिसा लोक को मिलिबो सेमति किछि नाही समस्त इक्वल और समस्त को चाकरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट पे धर तुम या फ्यूचर रे जाई ओएस पकेबो आईएएस पकेबो समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलिबो चाकरी करियो जे नाही सी कम मार्क किछि हम ताको सिलेक्ट करबा या को सिलेक्ट करबा केते हबो तापर हला फ्रैटर्निटी प्रियम्बल आसिया पूर्व एटा फॉर्म गाइड्स रे फंडामेंटल राइट रे भी मेंशन अछि फंडामेंटल ड्यूटीज 51 ए रे भी अछि और डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसीज रे अछि The basic objective preamble रो जो fraternity लिखा है common brotherhood और solidarity among our citizens of India रे रही तार basic दीटा dignity of the individual ठीक रहबा unity and integrity of the nation माने dignity of the individual को प्राधान्य देछि हम देश भीतर भाईचारा रहिबो अटेंड की broader perspective रे कोन mutual respect harmony common brotherhood among people despite differences of religion language caste culture or region तापरे preamble as a part of the constitution preamble जेतोल ऐड हितला इनिशियली फॉर जुडिशियल रिव्यू को जाइतला बेरीबारी यूनियन केस रे खाली मने रखि जो केस रे सेतोले सुप्रीम कोर्ट कहितला preamble is not a part of the constitution गोटे केस जाइतला बेरीबारी यूनियन को 1960 रे ये पचारिबो एबे तुमको preamble constitution नो पार्ट की नुह ये आंसर मु लास्ट रे कहू बेरीबारी केस रे कहला ना preamble is not a part of the constitution तापरे लैंडमार्क